अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम Palo Alto के लिए, कि जो हम जितना भी Palo Alto में हमारा जो बेसिक्स है ना, मतलब क्या है चीज, कैसे कनेक्ट करना है Palo Alto को वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो हम अभी देख रहे हैं इनिशियली। अभी अगले फ्राइडे से, अगले सैटरडे संडे से हम पूरा स्टार्ट कर लेंगे। जैसे हमारा जोन्स हो गया है, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस के टाइप्स कितने हैं, ओके, दैट वी विल Okay. कवर। थैंक यू। सो ओके, All right, अकॉर्डिंग, Vijay या sir, you can start now, right? थैंक यू, We are on थैंक the यू। times. Thank you so ओके, much, guys, for joining. You can start. Thank you. okay, thank you. I'm sharing my screen, guys, so just please confirm once it's visible with you. Hope so it's visible now. Yes. Okay, thank you so much for the confirmation. Okay, so guys, previously we already discussed, right? Initial configuration. So like how to take the administrative control. So we already checked. Okay, so there is a multiple type of the console cable is available. Then once we got the console from that particular device, then we can configure the management IP addresses. Okay, and once we get the management IP addresses, then after we can connect that Ethernet cable to this particular laptop, and we can directly configure, like we can take the SSH connection, telnet connections via CLI, and through GUI we can connect that HTTP or HTTPS connections. Okay, now, next one we will check, okay, initial configuration of the Palo Alto firewall, okay, and then after we will check this all like configuration available, which type of the configuration available. That part we will check. But before that, we will check the initial configuration of the Palo Alto firewall. So yesterday we already know like how to add the Palo Alto firewall and how to add the Windows machine, switch, router images, okay, right? Then I just did one thing. Okay, I just take the one Palo Alto firewall and just here one the Windows machine and connect through management auto. Okay. Now I'm taking the console access of the Palo Alto firewall. So in the virtual environment, in this like simulator lab, okay, but we have to just double click on it. Once we double click on it, then it will open the console access here of the Palo Alto firewall. So here you can see this is our Palo Alto firewall console access. Let me hit the enter. Okay. Let me close it. Let me open the once again. It's already open here. Okay, so this is our Palo Alto Firewall console access. Okay, and let me double click on this Windows machine as well. Then here you can see this is our Windows machine one. Okay, so let me enter the password. Okay, let's wait for some time. It will take some time here. Okay, I just entered the password. Okay, so what I will do, I will configure the management IP addresses here first of all. Okay, first of all, what I will do, okay, I just take the console access. Once I double click on it, new window is open. So what I will do, I will configure the management interface here. Okay, here I will configure the management interface as I will configure uh 172.16.1.100 IP address I will configure, and here I will configure 172.16.1.1 IP addresses I will configure. Then after I can ping this firewall from here in this machine. Then I will take the SSH access of this Palo Alto firewall. Okay, or I can take the GUI access as well. Okay, so let me check. Okay, so here you can see I can log in this Windows machine first. Okay, so let me configure this IP addresses of this Windows machine. So let me go to this network properties. Okay, then here you can see the change adapter settings. Okay, let me right click and go to the properties, LAN card properties. Okay, and here you can go to the IPv4, and here we will configure this IP addresses 172.116.1.1. Okay, and 255.255.255.0 we will configure this one. The gateway not required is that's okay. Okay, we will not configure the gateway. And here you can see double click and go to the details. So this is our IP addresses where it is. Okay, I think it's not taken. I think let me check one more time. 116.1.1 and 255.255.255. Okay, and okay, and let me do one thing. Disable and make it enable one more time.
the details. Okay, here you can see the IP addresses changed now 172.16.1.1, and this is the /24 IP addresses. Okay, and let's configure the Palo Alto Firewall management interface. We will configure first one. Okay, so we have to enter this one. So password is username is admin, and password also it's admin, but it will ask to the change the password. Okay, so old password is admin and new password is admin at 123. I'm just confirming that password once again. Okay, so here you can see we are logged into the Palo Alto Firewall. Okay, and once we logged into Palo Alto Firewall, this is a greater than icon, which means the operational mode. This is the we will check about the Palo Alto Firewall mode also. Okay, there is a two mode, guys. One is the operational, one is a configuration mode. So we will check that part later on. Okay, then let me configure the first of all management interface. So how to configure the management interface? Okay, so the management interface management IP already configured or not, that how you can check. Okay, so there is a one command is available, guys. Okay, so let me uh, check show interface management. Okay, and here you can see IP addresses is showing unknown, which means the IP management IP addresses management interface IP address is not configured yet. Okay, here you can see the gateway is nothing, default gateway is we didn't configure it. IPv6 address is showing unknown. This is a link local addresses is by default one. Okay, IPv6 default gateway is also not showing here. Okay, so let's do one thing. Let's configure the management IP addresses here 192.168. Sorry, 172.168. Okay, that one. So let me type that one 172.16.1.100/24 IP addresses we will configure here, and let me change the color as well. Okay, it's red. Okay. So I just configured that IP addresses here and let me duplicate of this one. And this is a we configured as a 1.1. Okay. So let's configure this management IP addresses. So first of all, okay, we have to do one thing, guys. Okay. So let me show you one command, show system info. Okay. So which means it will showing the Palo Alto firewall information, everything it will show here. Okay. So let me show you that things. Okay. Okay, let me upload. Okay, not able to scroll up. 1 second. Okay, let me hit and run this command one more time. Okay, so host name is showing the PAVM. Okay, which means the Palo Alto VM virtualization. This is the model. Okay, virtualization model is available. IP address is showing unknown, which means the management IP addresses. Okay, public IP address is showing unknown. Net mask, default gateway, IP assignment. Here you can see it's the DHCP, which means the IP addresses management IP address is showing the DHCP. So before assigning the management IP addresses here, okay, you cannot assign the as a DHCP. We have to only assign the IP address as a static one only. Okay, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप भी यहाँ पे डीएचसीपी के थ्रू करोगे, ठीक है, डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, अगर डीएचसीपी सर्वर से कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करोगे, तो एवरी टाइम अगर ये फायरवॉल रिबूट भी होगा या कुछ भी होता है तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, सो आपको जब भी एक्सेस लेना रहेगा तो फिर आप वो आईपी एड्रेस पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन सा लेना पड़ेगा और कौन सा आईपी एड्रेस है। ठीक है, so that part is like more difficult for you. Okay, so we can do one thing, we will assign the only static IP addresses here. Okay, so we have to make it as a static. Okay, so to configure the Palo Alto firewall I management IP address, so go to the configuration mode. Okay, 1 second. Okay, we have to go to the config. We have to go to the configuration mode. So we have to enter this command configure. Then here you can see entering configuration mode. Okay, so right now you are in the configuration mode. The icon is a hash icon. Okay, then you can just configure the commands like that IP address through CLI only. Okay, so we will configure that IP address. So first of all, we have to make a as a static one. Okay, so set device config system type and static. Okay, so we have to type this one. Okay, and the IP addresses will be now as a static one. If you want to check, let me, okay, but we have to do the commit one. So let me configure the first of all IP address, show device config system IP address.
Now we have to enter in the past IP address 172.168.1.100. Okay, the net mask we have to assign net mask as well 255.255.0. Okay, so we configure the IP addresses here. You can see. Okay, and also we configured the net mask subnet mask is we configured as a /24. Okay, and this is we already did what we did here. Right now you can see the we just configured as a IP address as a static one, and we assigned the IP address, and with this we did this on only subnet mask we applied. Okay, but we have to save this configuration. Without saving, if you are go to the exit mode here. Okay, let me type. Okay, exit mode, and let me show the show interface management. Here you can see still IP address is not applied because we didn't save that configuration. Okay, so let me go to the one more time this configuration mode, and let me run those commands. Set device config system type static. Okay, then set device config system IP address. It's 172.168.1.100, and net mask is a 255.255.255.0. Okay, now we have to save the configuration. So to save the configuration, we have to run one command, commit. We have to do the commit. Once you hit enter, commit, after the commit, then it will start the saving this configuration. Okay, so जैसे आपने यहाँ पे IP addresses assign किया guys. Okay, so IP address assign करने से So जैसे पहले मैंने यहाँ पे किया guys, one second, कौन बात कर रहा है guys? Any guys, Ramachandran, right? Bro, your voice is not clear. Who is speaking? Guys, could you please confirm? who's speaking? Guys, confirm. अरे यार, हेलो ओके गाइस, जिसको भी बात करना है प्लस Okay, अनम्यूट कर लो या जिसको भी बात करें प्लस अनम्यूट करो या or यस यस रामचंद्रन टेल मी. yes, Ravachandran. yeah, so this particular access this particular lab, right? So we'll sharing right this URL and user ID. So Ramachandran, your voice was not clear, so could you please type Ramachandran, your your question in voice the is chat, not please? clear. Could you type your question in chat? yeah, okay. Let me log in. Yeah, sorry. Yeah. ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने अभी क्या किया कि जो आईपी एड्रेसेस था उसको हमने एज अ स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया. जो इंटरफेस था उसको स्टैटिक आईपी एड्रेस करने के लिए हमने वो कमांड रन किया. देन आफ्टर वी अप्लाइड द आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क. उसके बाद हमने यहाँ पे कमिट किया. जैसे हमने कमिट किया तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो एक जॉब आईडी यहाँ पे शो करेगा. जितना भी आप कमिट करोगे तो जॉब आईडी एक नंबर से इंक्रीज होगा एवरी टाइम. अभी मैं नेक्स्ट टाइम कमिट करूंगा तो वो 3 नंबर से आएगा. अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है ना और मैं कमिट करूंगा ना, तो वो कमिट के लिए मना कर देगा, बिकॉज वहां पे कुछ कमिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई चेंजेस ही नहीं है अप्लाइड. ओके, सो जितना भी कमिट करोगे तो एक नंबर से इंक्रीज होगा. अभी नेक्स्ट टाइम में कोई चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ से एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा. और जैसे कमिट हो जाएगा तो वहां पे एक सक्सेसफुली कमांड जो आया वो यहाँ पे शो करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली. ओके, सो नाउ अभी मैं now I'm going to the operation mode one more time, and let me configure the show interface management. And here you can see the IP address is now configured 172.168.1.100, and net mask is a 255.255.255.0. And let me type show system info. Now here you can see the IP address is configured. This is management IP address. This is the network gateway, and IP address assignment is a static one. So make sure the management IP addresses assignment is always static, guys. Okay, clear? So this is how we can configure the management IP addresses first of all. Okay, now we just did the commit. Okay, now let me try to access this firewall from this machine. Okay, so first of all, I will try to ping whether the firewall is reachable or not. Okay, so let me go to this command prompt. Okay, CMD command prompt ping 172.16.1.100. Okay, so I can able to ping that firewall. Okay, so let me do one thing. Let me close this one and let me open this Chrome browser, and I will try to access the HTTPS access. Okay, so
Let me try to type https colon whack 172.16.1.100. Okay, and hit enter. So first of all, once that firewall is like hitting, it will ask for the login page. Okay, so certificate is not upload. That's why it's asking for the yes. Go to advanced, proceed further. Okay, now it will ask for the login username and password. You already changed the password admin, and password is admin at 123. We already changed it. Okay, through CLI. So yeah, we can able to log in here. You can see. Okay, so let's wait. Let me do one thing. Let me increase the resolution. What's the resolution right now? Okay, so it will takes few minutes, few seconds, and we will like we can see the dashboard of the Palo Alto Firewall. So जब भी आप Palo Alto Firewall को लॉगिन करोगे, so पहला पेज आपको डैशबोर्ड का शो करेगा, guys. Okay, so let me check. So you set the resolution 901. Can you just click? We'll give you a No, I increased that 1400. I think just, 1490. just, just go. Yeah, I'll just going go. going. One second, one second. Yeah. Yeah. Just click. Resolution 14 151. Just That's go, all. go, go. Just go. Click, click, and select the 440 900. Yeah. Okay, okay. Okay. Apply. Okay. Yeah. Keep changes. Okay, okay, done. Now It's it's taking, yeah, yeah. Okay. So here you can see, guys. Okay, this is our Palo Alto firewall dashboard. Okay, let's wait for two seconds, few seconds. Okay, so you can close this window, not an issues. Okay, here you can see this is about Palo Alto firewall dashboard, guys. Okay, we will discuss on the details about this Palo Alto firewall. Okay, so here you can see our general information, what is the Palo Alto firewall device name, then IP addresses we just configured, right? 172.16.1.100, and this is our management net mask. Okay, so this /24. Okay, now you can see that serial number, everything, CPU ID. This is the our software version 904. Okay, and here you can see the two plans, the management plan and data plan. Here you can see. Okay, and this is the our logged in, who logged in. Here you can see the first of all we took the console, right, through CLI. Okay, and who is the user? Admin took the console. Now we just logged in through web login. We just did, right. So 172.16.1.1. Okay, now here you can see everything, each and every tab. Here you can see ACC tab is available, monitor tab, policy, object tab, network, device. Each and every tab we will discuss in the detail in the upcoming session. Okay, so here you can see this is our Palo Alto firewall and how to configure this Palo Alto firewall initially. So that we checked already. Okay, so यहाँ पे किसी को doubt है, any doubt how to configure the management interface and apply the subnet mask and IP address? Anyone any doubt, guys? Hello, Shiv, just tell me. विजय, ये जो आपने बताया था ना, HTTPS 192.168.1.1 करके GUI हाँ करके ले हाँ, सकते हैं। वो कॉन्सोल एक्सेस यहाँ पे जो आपका था, तो वहाँ पे 192.168 जो आपका हार्डवेयर डिवाइस आएगा ना, उस पे हाँ बाय डिफॉल्ट रहेगा, ये अपना हाँ, वर्चुअल मशीन है। तो अगर हमको डायरेक्ट अगर उसी आईपी से अगर लेना है तो लेना है तो ले सकते हो, क्या करना है सिंपली। अच्छा अगर ये एक आपका Palo Alto फायरवॉल है, आपका हार्डवेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है, हम्म और उसका Palo Alto फायरवॉल ये हार्डवेयर है, समझ लो कोई भी मॉडल है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कोई विंडोज मशीन या कोई भी पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, तो हम्म क्या करना है, यहाँ पे मैनेज केवल एक कनेक्ट करना है मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू। ओके, और ये आईपी एड्रेस यहाँ पे जो विंडोज मशीन है ना, उसको आईपी एड्रेस देना है 172.16.1.1 या 10, कुछ भी दे दो, वही रेंज में देना है, फाइन फाइन 1 डॉट, ठीक है। ठीक और उसके बाद यहीं से एचटीटीपीएस कर लो, आराम से एक्सेस मिल जाएगा। ओके। इसमें शो कर सकते हैं क्या, मतलब कौन कौन सी इंटरफेस है? या बहुत सारे इंटरफेस है, जैसे हमारे 4 इंटरफेसेस अवेलेबल थे ना, और तो दूसरा ये चीज, अगर मुझे अगर डैशबोर्ड से अगर मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना है तो
हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं मैनेजमेंट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर वगैरह जो भी करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से भी मैनेजमेंट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ से आपका GUI एक्सेस मिल गया है, ठीक है, देन इफ यू वांट टू चेंज द आईपी एड्रेसेस एवरीथिंग, देन यू कैन कॉन्फ़िगर हियर. Let's go to the device setup interface and management. Okay, so Okay. from here you can change that IP addresses. Okay, so that 172.16 at that one, this is your IP addresses, speed, everything. Okay, and what service you want, HTTP, telnet, SSH, this one. So this is by default available. If you want to more, then you can apply it. Okay. Okay. Thank you. Sir, Okay. instead of this default management interface, can we make another port as a management port in this Palo Alto model? Okay, so there is a one management port is available. Okay, That is right. default. But Default apart one. from that, can we make another port as a management? Okay, see, यहाँ पे Palo Alto firewall, what is happening, bro? Okay, so suppose there is a one Palo Alto firewall. Okay, let me draw one diagram. Okay, so this is my Palo Alto firewall. Okay, and this Palo Alto firewall, this management port is connected here in this Windows machine. Okay, as per our diagram right now. Okay, and one interface showing here, which is our Ethernet 1/1. This is our inside one. Okay, 1/2. This is the 1/2. This is our interface. It's outside interface, and this is our 1/3 is a DMZ interface. Okay, now here is the in the inside there is a one machine is available, and if you want to ping this here, okay, so it will not ping, because by default everything is, yeah, it's a disabled here. Okay, each and everything services, whatever the services available on the management interface, it's by default disable from other interfaces. Okay, here if you want to access, we already set up the configurations policy in everything here. Okay, you can access the internet from this machine as well, but if you want to ping this interface, you cannot ping. So if you want to ping, or if you want to apply the as a management port services, everything you can, we have to create one interface management profile. This profile we have to configure, and we have to apply that profile here. Okay, like here management profile. Okay, that part Okay, we okay. will check in the detail, like, okay, so first of all we So will try to ping and Dhirendra, everything. yeah, so Dhirendra, like it's more about like by default we have one management port, Right. बट अगर हमें उसके दूसरे इंटरफेस को बनाना है, जैसे सर ने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि Hmm. अगर किसी इंटरफेस को आप यूज करते हो तो उस पर कोई सर्विसेज नहीं चलेगी, पिंग, मैनेजमेंट, एचटीटीपीएस, बट आपको बनाना है, सो यू हैव टू क्रिएट इट। Yeah, so here ओके, सो from in, ये तो yes, आईसीएमपी तो अलाउ करना पड़ेगा पोर्ट को, लेकिन जो मैनेजमेंट पोर्ट है वो बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी अलाउ है ना? yes, हाँ, management मैनेजमेंट port पोर्ट पे में, allowed है. हाँ, Yes, yes, go हाँ, ahead, sir. यस यस। मैनेजमेंट पोर्ट बाय डिफॉल्ट सारी सर्विसेज अलाउ है, पिंग, करेक्ट है। एचटीटीपीएस एंड मैनेजमेंट ट्रैफिक, और बट अदर पोर्ट्स पे बाय डिफॉल्ट सब डिसेबल है, सर ने बताया। ठीक है, Yeah, अगर आपको it's करना है तो आपको मैनुअली मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा इंटरफेस को, उसको कॉल करोगे तब होगा वो। करेक्ट हाँ. करेक्ट So first of all, we have to create a करेक्ट। management profile, okay, and we have to ping SSH, Telnet, HTTP, everything we can allow, and that profile we can allow in this interface. Okay, so let's we created that profile, interface management profile, and let me click on this interface, and let's me go to the advanced. Okay, like first of all, I have to select the type of the interface. So let me type the L3 interface. Okay, and once it's configured, then here we have to apply this management interface. Okay, management profile we have to apply. Then after you can able to ping that interface and everything. Okay, we will check in the detail upcoming session, bro. Okay. Okay, so where we are. Okay, so anyone has have any doubt, like how to configure this management IP addresses, and this how to we can access, we can how we can access this GUI access and everything. किसी को doubt है? विजय, मुझे ये क्लियर हो गया कैसे कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन ये जो 8 इंटरफेस है ये किस लिए यूज करेंगे? वो हम करेंगे हमारे एज पर अवर रिक्वायरमेंट। वी हैव हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक विंडोज मशीन यहाँ पे ले लेंगे, एक विंडोज मशीन यहाँ पे ले लेंगे, एक सर आई राउटर यहाँ पे ले लेंगे, तो वी कैन अप्लाई लाइक दिस इज आउटसाइड जोन, इनसाइड जोन. ओके, सो दैट वी विल कवर इन द अपकमिंग लेक्चर. ओके, ओके, एज पर आवर टोपोलॉजी वी कैन चेंज. ओके, ओके, यहाँ ओके, पे ऐसा नहीं है कि 8 इंटरफेस है, यू कैन क्रिएट सब इंटरफेस एज वेल. ओके, 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 सो थैंक यू। यू कैन क्रिएट मल्टीपल वन. या
Okay, now let's check that one, guys. Okay, first of all, we already check how to do the initial configuration of the Palo Alto firewall. Now we will check configuration management, this part. Okay, and this is the one of the best part, like best practice for the taking the backup, and for any, like whenever you are doing the upgradation of the Palo Alto firewall. Okay, whenever you are trying to replace that faulty firewall with a new firewall, then this is the best practice. Okay, so there is a five configuration management it's port available. So let me open this firewall device. Let me go to the device first of all, and in the device here in the setup, let's go to the operation. So this is our configuration management part. Okay, so that part we will check right now. Okay, so here you can see there is a five types is available. First of all, candidate configuration. Okay, first of all is a candidate configuration, second is a running configuration, third one is a configuration version, fourth is a named configuration, and this is a saved configuration. Okay, so guys, just like you can say, like you can confirm like what is the theory about this one. Okay, don't like जैसे ही आपका ये theory है ना, वो practical totally different है. Okay, so don't confuse. Okay, आप just understand कर लो कि कैसे उसका configuration ये वगैरह है. ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिकल है ये टोटली डिफरेंट है. जो आपका रूटिंग, आप डेली बेसिस जो भी रूटिंग लेते हो, राइट, इन द रियल टाइम एनवायरनमेंट, ओके, इट्स टोटली डिफरेंट, गाइस. ओके, so I will inform you how to take the backup and how to import and how to export and how to load everything we can, how we can do. Okay, so let's check this one. First of all, we'll check the theory. Okay, so first of all, guys, it's showing candidate configuration. Okay, whatever you are configuring right now, okay, I'm configuring that management interface. Okay, so I'm just configuring that interface. Whatever I'm right now configuring, it's just showing in the candidate configuration only. Okay, I didn't apply that. I didn't save that configuration right now. Okay, before saving that configuration, it's just showing management interface. Whatever you are configuring, you are configuring the some security policy, you are configuring the interface, you're configuring the net role, you are configuring some profiles, you are configuring some applications. Okay, whatever configure you are right now, it's showing in the candidate configuration only. Okay, once you did the commit, once you applied the commit command, okay, it will go to the running configuration. Okay, once you applied the commit command, then it will go to the running configuration. Okay, then once you applied the commit, it will in, create one version number also. Okay, so it will increase by one also. Okay, and it will showing the date and everything. Okay, date and time, it will show with the date and time, and it will like create one configuration version as well. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो या कुछ भी जोन वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा चीज यहाँ पे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में शो करेगा. बट जैसे आप अप्लाई करते हो कमिट ऑप्शन, कमिट कमांड जैसे अप्लाई करोगे, तो वो जाएगा पूरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और साथ ही में एक कॉन्फ़िगरेशन वर्जन भी यहाँ पे हो जाएगा. आपने यहाँ पे कमिट कर दिया और उसका वर्जन यहाँ पे आ गया, डेट एंड टाइम यहाँ पे शो कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने कोई एक एडमिन यूजर है, एबीसी यूजर क्रिएट किया और उसका पासवर्ड 123 क्रिएट किया. ओके, देन उसका वो कमिट करने के बाद वो सेव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे जो एक कॉन्फ़िगरेशन वर्जन यहाँ पे आ गया. ओके, बट आपने मैनेजमेंट मैनेजर ने आपको बोला कि मेरे को नहीं, एबीसी यूजर मेरे को नहीं करना है. ठीक है, तो आप वापस ये वाला वर्जन से पूरा कॉन्फ़िगरेशन लोड कर सकते हो, या तो रिवर्ट भी कर सकते हो. ओके, दैट पार्ट वी विल चेक. नाउ नेक्स्ट वन, गाइस. ओके, वंस यू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव करना है, ठीक है, आपको वो सेव कर सकते हो थ्रू नेम ऑल्सो. ओके, सो सपोज हमारा कोई बैकअप, हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया. ओके, और अपने को कोई वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नेम से सेव करना है, सपोज. ओके, गुइनेट से मैंने एक नाम सेव कर दिया यहाँ पे. ओके, और वो नाम मैंने यहाँ पे बैकअप में सेव कर दिया. ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वो बैकअप चाहिए गुइनेट वाला, ठीक है, तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और वो एक्सपोर्ट वाला फायर कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है, वो आप नए वाले फायरवॉल में भी इंपोर्ट कर सकते हो. ओके, सो ये तो हो गया चार चीज. ओके, लास्ट वन इज सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, उसमें क्या होगा, सो वेन एवर you are receiving the guys daily basis ticket. Okay, so suppose that you received one ticket. Okay, one incident you received right now. Okay, I'm saying in the real time environment. Okay, so यहाँ पे real time में क्या होता है, मैं आपको एक example दे रहा हूँ. Okay, so you received one incident. Okay, and in incident there is a one new project. Okay, so they requested multiple around 100 or
150 rules they wants to create on the Palo Alto firewall. Okay, now you are trying to configuring some rules. Okay, you started the working on this incident. Okay, so you created 1, 2, 3 up to 10 rule you created, and suppose in case of any electric power issues and whatever, like power went down and firewall went gone or like down, okay, went down, then firewall is come up again, then whenever you starting to, or like आपको जैसे काम कर रहा है, okay, once you like firewall is up, then once you start the working on this incident, okay, so you have to start once again. So you can do one thing, guys. Okay, you configure 10 rules. Okay, then you can save the configuration. Okay, now firewall went down. Okay, once it's come again, then you can start from 11, 12, 13 up to 11500. Okay. सो जब भी आपके पास कोई 100 रूल्स वगैरह कोई ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, और आपने यहाँ से 1 to 10 आपने कोई रूल्स वगैरह किए और उसी टाइम पे फायरवॉल फॉल्टी हो गया या तो फिर डाउन चला गया पावर इश्यू की वजह से, ठीक है, और जैसे फायरवॉल अप आया फिर आपने देखा कि मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन सेव ही नहीं किया, ठीक है, तो आपको पहले से वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको जिस जैसे इतना बड़ा लेंदी टास्क मिलता है, सो गाइस मेक श्योर आप वो कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते जाओ, ताकि अगर कोई भी इश्यू आए ना, तो आप डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो सेव किया, आप रिवर्ट भी कर सकते हो, अगर आपने वो गलती से वो रूल बना दिया बट वो नहीं करना था, तो आप रिवर्ट भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स चेक दैट पार्ट गाइस। ओके, so let me do one thing, let me rub this out and let me go to the Palo Alto firewall Windows machine. Okay, so this is our GUI access. So first of all, revert last configuration, saved configuration. Okay, so यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी आप configuration यहाँ पे कर रहे हो, okay, so we configure trend rules and everything. Okay, so we can save these changes here. Okay, we can save the changes, and you configure the 11th rule. Okay, but you it's saying no, or it's not looks like that, then you can revert the changes as well. Okay, and once you revert the changes before the commit, everything is reverted. ओके, आपने कुछ 10 रूल्स बना दिया और आपको नहीं चाहिए कि नहीं, दैट्स द इट्स नॉट इनफ। ओके, सो यू आपने कमिट भी नहीं किया, तो यू कैन रिवर्ट द चेंजेस। ओके, सो रिवर्ट द लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो अवेलेबल नाउ। नेक्स्ट वन इज अ सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आई विल शो यू, इसका अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज केस क्या है, बट आई विल शो यू कि रियल टाइम में आपको क्या क्या करना है। ओके, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ओके, सो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, सेव्ड नेम कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट आप बता सकते हो, तो आप यहाँ से वो नेम कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नाम देना पड़ेगा गुइनेट करके, और पीछे जो भी एक XML करके एक दे दो, ये फॉर्मेट है उसका, ठीक है, तो यू कैन सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड यू कैन सेव इट राइट नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ सेव्ड कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन था ये वाला, ठीक है, वो भी आप सेव कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या है, लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो आपने ये जो नेम से किया ना, वो आप लोड भी कर सकते हो। एंड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन, ठीक है, सो वी committed right one already we created, there is a showing only one version. Okay, so if you want to save this one, and yes, this one, it's showing this reload page when this task is completed, configuration will loaded, please task manager status. Okay, so यहाँ पे वो जो चीज है ना, यहाँ पे शो करेगी। ओके, लोड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड है, तो हमारा वो पूरा का पूरा शो हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक्सपोर्ट, तो आपने जो सेव किया है ना, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन वर्जन भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जो आपका यहाँ पे था। देन यू कैन एक्सपोर्ट द डिवाइस स्टेट, डिवाइस स्टेट मीन ईच एंड एवरीथिंग, फायरवॉल पार्ट्स, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, each and everything you can export this one. Okay, and you can import this one. Okay, so you can import the named configuration whatever that one, and device state also. Okay, आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, let me tell you कि क्या करना है इसमें, exactly क्या करना है। Okay, so first of all, suppose you have one firewall right now. Okay, so this is your Palo Alto firewall. Okay, now this firewall is you are trying to upgrade at whatever you are trying to doing. Okay, so let me try, this is our running version 9.0.4. Okay, now you want to uh, upgrade this Palo Alto firewall through 9.1.4, this version you want to upgrade. Okay, so before upgrading, okay, any device, either it's a routing, a router, switch, a load balancer, whatever device is available, you have to take the backup. This is a best practice, guys. Okay, so whenever you are trying to upgrade any device or whatever changes you are doing on the Palo Alto firewall or what any device, okay, the best practice is
take the backup of this particular device before the upgrade or before doing any changes. Okay, take the backup. Okay, so I want to take the backup of this Palo Alto firewall. Okay, so let me do. Okay, so what I can do, I will do one thing. Okay, I will save the configuration here. Okay, so let me apply the name guinet.xml. Okay, and I'm just save this configuration. Okay, here you can see config saved to Guinet XML file. Okay, so this is the file. I just saved that configuration. Okay, and here that file is saved to the local to the firewall, not our system. Okay, now that firewall, that configuration I want in my local machine, then you have to go to this one, export, then let me search with this name. Yes, I can find this name. Okay, and click OK. So that firewall name here you can see. I'm I export this name. Okay, backup. 1 second. थोड़ा slow है. Okay, keep. यस, सो जो आप मेरा लोकली जो फायरवॉल जो बैकअप था मैंने जो सेव किया था वो अभी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है मेरे पर्सनल पीसी पे. ठीक है, अभी क्या करना है कि जब भी whenever you are trying to upgrade the firewall and suppose this firewall gone faulty. Okay, this firewall gone faulty. Okay, now you raise a case with the Palo Alto tech vendor and they send a new device. They send a RMA device. Okay, then what RMA? Okay, they sent RMA device. Now you have a new firewall. Okay, so आपके पास यहाँ पे नया फायरवॉल है और वो फायरवॉल ये फायरवॉल से रिप्लेस करना है. तो क्या करना है, ठीक है, आपके पास पूरा का पूरा A to Z कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज you have already backup is available here. Then that backup you can load in the new firewall. Okay, once you import that one you can load it. Okay, so आपको यहाँ पे क्या करना है, once you have a new firewall, then you can do one thing guys, importer, you can just connect the interface management interface and everything, and you have backup available on your local machine. Okay, go to you can access this GUI access, and you can do one thing, just import. Where is the backup? Okay, so let me go to the download GUInet. Okay, and this is our available, and okay, so it's importing. Okay, it's importing that backup to the locally to the firewall. Okay, it's not applied yet. Okay, firewall जो backup था वो firewall में यहाँ पे सेव हो चुका है. ठीक है, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, और वो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे करना है लोड. उसके बाद जो भी आपका बैकअप था वेर इट इज गुइनेट एक्सएमएल एंड क्लिक ओके. तो जैसे आपने किया यहाँ पे लोडेड, यहाँ पे टास्क मैनेजर में है, और वो भी आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन जितने भी टास्क है ना इट विल शो हियर गाइस. ओके, सो इट्स शोइंग सक्सेसफुली लोडेड. तो आपकी नई वाली फायरवॉल में जो बैकअप था ये वाली फायरवॉल का, वो आप पूरा का पूरा बैकअप यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और वन मोर थिंग गाइस, जब भी आप बैकअप लो ना, इज जस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन वाला मत लेना. आपको जब भी बैकअप लेना है ये तो लेना ही लेना है, बट साथ में यू कैन जस्ट टेक द डिवाइस स्टेट बैकअप. जस्ट यू कैन क्लिक एक्सपोर्ट हियर. जैसे आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, सो इट विल टेक A to Z बैकअप. जितना भी बैकअप रहेगा ना Palo Alto फायरवॉल पे, वो यहाँ पे ले लेगा. ओके, एंड आप डायरेक्टली उसको क्या करना है, इंपोर्ट डिवाइस स्टेट, और इंपोर्ट करना है जो बैकअप है वो नई वाली फायरवॉल पे आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया. एंड ओके, जैसे ही आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया तो लोकली सेव हो जाएगा, और वही बैकअप आप यहाँ से लोड कर सकते हो. ठीक है, सो वेर इट इज 1 सेकंड, लोड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन वगैरह जो भी है. ठीक है, तो जो भी आपका वो फायरवॉल का है यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है बिकॉज वही फायरवॉल हमने लिया है, बट नई वाली फायरवॉल में जो आपने इंपोर्ट किया ना वो बैकअप, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा. तो मतलब पुरानी फायरवॉल पे जितना भी आपका सेटिंग्स था वो पूरा का पूरा नई वाली फायरवॉल पे आ जाएगा. ओके, सो जस्ट आपका यूज केस में कितने चेंजेस आते हैं, सो यू कैन जस्ट लाइक यू कैन वर्क ऑन द सेव export. This is the first step guys. This is a second step on the older firewall. If you want to apply the new firewall, this backup in the new firewall, this is a third step, and fourth step is a loading. Okay, anyone have any doubt? किसी को डाउट है यहाँ पे? आई नो थोड़ा प्रैक्टिकल वो थियोरेटिकल में जो पार्ट में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बट ये वाले अभी जो प्रैक्टिकल बताया ना उसमें आपको थोड़ा समझ आ गया होगा. तो लोकेंद्र, यस बैकअप हेलो किस फॉर्मेट में रहेगा? एक्सएमएल में आप एक्सएमएल में यस करोगे तो वो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा. ओके, आप डायरेक्टली विदाउट नेम भी कर सकते हो, बट
उसमें क्या है, एक्सएमएल में वो पूरा का पूरा वो जो Palo Alto सपोर्ट करेगा ना वो उसमें करेगा, तो वो दैट्स द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ओके। या हेलो विजय, यस यस प्लीज चिव या टेल मी। अगर जब हम नए पालो अल्टो में जब ये सारा लोड करेंगे तो मुझे उसके लिए पहले मैनेजमेंट तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं? Obviously, bro. Without any like directly, you cannot directly access the Palo Alto firewall through GUI access, right? So आपको क्या करना है, हमने जैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया, मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, देन वी एक्सेस द GUI एक्सेस, GUI एक्सेस बाद ही आप यहाँ से कर सकते हो ना इंपोर्ट, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट। या दैट्स ओके। उसके बाद ही, ठीक है। सो दिस इज अवर द कॉन्फ़िगरेशन वन गाइस, ओके, एंड कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू कॉन्फ़िगर दैट वन, एंड लेट मी चेक द लास्ट वन, दैट्स द अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, आई जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने जस्ट एक ब्रीफ बताया, बट डिटेल्स में हमारा एक अलग सेशन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स डिटेल्स वाला। सो उसमें पूरा का पूरा प्रोफाइल, बट यहाँ पे क्या है कि समझ लो कि आपका कोई L1 इंजीनियर है, ठीक है, L2 इंजीनियर है, L3 इंजीनियर है, उसको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सो समझ लो L1 को आप फुल एक्सेस नहीं दोगे, आप उसको जस्ट रीड एक्सेस दे दो। ओके, यू कैन गिव द रीड एक्सेस टू L1 engineer. L2 engineer you can give the read access and some write access you can give. Okay, but यहाँ पे L3 engineer you can give the full access as well, not an issue. Okay, so you can assign the profile as well. Okay, so we have to create some profile here, and once the create the profile, you can assign this particular engineer as well. Okay, so let me show you that part also. Okay, we will cover the detail. Okay, so if here you can see the administrator account. Okay, there is a one user available only is the admin. It's a super user, which means he can do anything. Okay, anything. He can create a policy rule net, he can delete the rule net policies. Okay, he can create a new users, he can delete the new users also. Okay, so everything he can do. Okay, he is a master, we can say. Okay, now if you want to create a new user you can create, but before that we have to apply some profiles. Okay, there is a profiles is available. So let me do one thing, let me create one policy and everything. Okay, so let me create L1, and for L1 I want to just do the monitoring. Okay, 1 second, I don't want to this multiple tab. We will check this in the detail, but I want to apply this monitor tab only. Okay, and the rest of the things I don't want. Okay, so here you can see this is L1, L2, L3 engineer. I just okay did okay, and I just configure one L1. Okay, let me do one commit. Okay, once I did commit, okay, आपको let me show you in the GUI access. Where is the GUI access in the Palo Alto? Okay, okay, show job all. Okay, show jobs all. Here you can see we did the commit 2 3 times. Okay, so right now we are committing. Okay, it's showing active state, it's showing pending, 5% is completed, and it will show you the job ID as well. Where is the job ID? Here, 5. Okay, so this is the fifth number job ID. Okay, so you can type if you want to check this status only, job ID 5, show job ID 5 5. Okay, so here you can see now it's showing configuration committed successfully. Okay, और जैसे भी आपने यहाँ पे commit कर दिया ना guys. Okay, let me show you that one in the Windows machine. Okay, commit showing successfully, and in the setup in the okay, अभी आपने एक L1 engineer create कर दिया, but आपको मैनेजर ने बोल दिया नहीं मेरे को L1 नहीं create करना है. Okay, so you can do one thing, load configuration version as well. Okay, so आपके पास पहले कौन सा था? एक था, ठीक है, मेरे को पहले में जाना. Okay, let me do one that one. Okay, that's okay, and here you can see administrator, it's gone. But if you want to like move it back, okay, if you want to bring it back, so let's go to that setup and load configuration version. That's but real time it's not possible guys, because let me tell you that part also. Okay, let's wait for some time. What is the task status? It's showing completed right now, but I think we applied that one or not. Okay, real time में ये वाला possible नहीं है. You can just load the configuration everything, because let me tell you 1 second. Let me check the version as well one more time. Secondary I want to commit. Okay, administrator. Okay, it's not showing anyway. Okay, okay, yeah, here it's showing. Okay, so we are doing that one only. But यहाँ पे possible नहीं है. Why it's not possible? Because suppose in your team, okay, in your team
10 network engineer is available. Okay, and they are working on the like each and every task. Okay, so you are like suppose one user is working, second user, third, fourth, up to 10 user is working right now. Okay, they are working on the different rules and different policies. Okay, so if you are doing right now, this is working on that 10 rules and 100 rules. Okay, and he is working on the 50 rules and everything. He is working on the net rule. Okay, and 10th number is working on the some one rule only policy. Okay, he's trying to create one policy, but he by chance he created different policy or anything. Okay, now he did once he did this configuration version is a previous one, then everyone change also will affect. ओके, सो यहाँ पे कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है ना, और उसने वो वर्जन ही चेंज कर दिया ना, तो जिसका भी कमिट किया होगा जो भी किया होगा ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये वाला थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी बंदे ने यहाँ पे किया ना उसमें आप कमिट में जाके रिवर्ट कर दो, दैट्स इट। और लोड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन मत करना। ओके, so this is our basic thing guys. Okay, and let me tell you another thing. Okay, so this is our Palo Alto this account administrator, these things we already completed. View logs, okay, where you can check the logs also. Okay, so for the logging we have हेलो। to go to, yes please, who is this? Yeah, she, yeah, tell me. विजय थोड़ा सा धीरे धीरे बताइए ना, वो इतना जल्दी जल्दी स्किप हो जा रहा है, समझ में नहीं आता है। Okay, 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 ये okay. L1 रूल अपने बनाए कैसे थे, वो इतना जल्दी जल्दी हाँ, आप किए ना ये तो। तो जस्ट प्रैक्टिकल है ब्रो, बट इन द फ्यूचर हमारे पास एक पूरा सेशन रहेगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जैसे क्रिएट करते हो ना, ओके, सो लेट मी टेल यू वी हैव टू अप्लाई दैट सम प्रोफाइल लेवल अवेलेबल। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज सुपर यूजर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रोल वेयर एक्सेस अप्लाई, you can apply it. Okay, and you can apply the password policy authentication, everything we have to check in the details. Okay, but I did only one thing bro. Okay, वो आई जस्ट क्रिएट वन प्रोफाइल। ओके, सो जैसे मैंने L1 यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, तो वो L1 जस्ट क्रिएट किया यहाँ पे जाके। ओके, मैंने और कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे कोई नाम दे दो यार, L3 का नाम दे दो, मेरे को सब एक्सेस देना है। ठीक है, तो एवरीथिंग यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, तो ये क्रिएट हो गया L3 यूजर। ठीक है, और मैंने जस्ट कमिट किया, बट यहाँ पे जस्ट वो प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, वो प्रोफाइल अपने को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं L3 का कोई नाम दे देता हूँ L3 करके, और मैंने पासवर्ड कुछ भी दे दिया यहाँ पे मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, ये पासवर्ड दे दिया, बट यहाँ पे वो प्रोफाइल मेरे को ये कॉल करवाना पड़ेगा, वो L1 L2 का जो प्रोफाइल था ना, यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा तभी वो होगा। ठीक है, बट इसलिए मैंने वो बताया कि वो जब कमिट करता है तो उसको नेक्स्ट वर्जन को लोड कैसे करना है, उसीलिए वो पर्पस के लिए किया था, दैट्स इट। ओके, ये डिवाइस टैब में जाके आपने वो जो दिखा रहे थे अभी, लोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो यस कहाँ यस, से आया था? या देखो, डिवाइस में जाना है, सेटअप में जाना है, ओके, एंड सेटअप। ऑपरेशन में जाना है। ओके, फाइन। ऑपरेशन में जाना है तो वो पूरा का पूरा बैकअप यहाँ से लेता है। ठीक है, ओके। तो ये आपका डेली बेसिस है गाइस, ये थिंग इतना काम में आएगा ना, मतलब डेली बेसिस मतलब क्या है कि जब भी आप फायरवॉल को अपग्रेड करो तो ये चीज करते रहो। ठीक है, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यू आर ट्राइंग टू अपग्रेड, और कुछ डाउन करना है, कुछ भी करना है, पालो अल्टो फायरवॉल को रिबूट करना है, शट डाउन करना है, बैकअप ले लो गाइस। ओके, आपको क्या पता फायरवॉल रिबूट हुआ और कुछ बग निकला और फायरवॉल अप ही नहीं आया तो क्या करोगे? ओके गाइस, क्लियर? शिव? हाँ, ये यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिवाइस स्टेट करेंगे तो वो हाँ, सारा हो जाएगा। ये सारा का सारा हो जाएगा A to Z, ओके। मतलब ओके। जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, जितना भी A to Z फायरवॉल का पूरा ले लेगा। ओके। ओके, या, सो दिस इज द एक्सपोर्ट डिवाइस ही लेना है, जो भी लेना है, बाकी वो ओके। बाकी का वो जो लेना है आप आराम से ले सकते हो, बट डिवाइस स्टेट मस्ट लेना है। ओके, Okay. थैंक Yeah, welcome. Okay. Then after we will check the about guys the mode of the Palo Alto firewall. इतने mode है. Okay. By default there is a two modes are available guys. Okay. First of all, one is the CLI. Second one is the GUI access. And CLI may whenever we are trying to log into the firewall, we are going like we are entering in the operation mode only. Okay, so operation mode symbol is the greater than, and once we doing the any once we want to configure anything like a management port and anything we want to configure, then we have to go to the configuration mode. So here we will apply the command configure, and you will enter the
configuration mode. This is the configuration mode, guys, icon. Okay, and whatever the you want to show configuration, show command, whatever you want, you can go to the operation mode and you can do. Okay, and this is a GUI access. You can access the through HTTP or HTTPS, guys. Okay, you can access the Palo Alto firewall. Let me tell you this one. Okay, so that's the operation command. Okay, this is the by default Palo Alto login into this mode. We can view this information in this mode, and we can restart, load, configuration, shutdown of the Palo Alto firewall, and the sign of this as a greater than. And this is the hash icon of the configuration mode. And basic command here you can see the show system info. So it will show you the all the this one Palo Alto firewall basic information. It will show you. Okay, so right now I'm the GUI access. So show system info, so it will show you the all the information here. You can see, okay, what is whatever is available right now, it will show you. Okay, another one. Okay, if you want, if you don't know what is the command after the show, you can press the question mark. Okay, it will show you the everything, guys. Okay, at everything it will show you. Okay, show clock. Then right now it's showing more command. It will show. If you want to pick that one, just press the Q. Okay, once you press the Q, it will show you here show clock and hit enter. So it will show you the clock as well. Okay, so multiple command is available. Show clock, show interfaces, show interfaces also admins. Okay, show admins means which admin is available. Show admins. Here you can see admin is logged in. Only one user is available, and where is logged in? Like through console and through web also. We are able to log in, right? Through web, he idle for the last 30 seconds. Okay. And here you go, and if you want to clear the screen, okay, so let me do one thing. I want to clear the screen. Just do Control and L. Okay, so it will clear the screen, guys. Okay, and request restart system, it will ask for the request system, then it will showing this one. Shutdown you can do request for, you can request it. Okay, so let me do request. Okay, if you don't know like all the spellings and everything, just type req and press the tab icon. It will fulfill this command request system, and just enter question mark, and here you can see clone system, external disk, fqdn, self test, and everything it will show you. Okay, then the request restart. Okay, one second. It will show you multiple command. Request where it is restart. Okay, so it will restart also. Okay, here you can say request restart, then after system, then it will restart your system. Once you hit enter, it will asking for yes or no. I'm just typing no, I don't want to restart right now. If you press the Y, which means it will start restart your machine and everything. Okay, now question mark, which means if you don't know anything, just press the question mark. It will show you all the commands, guys. Okay, whatever the command, it will show you here. SCP, SAT, request, schedule, ping. Okay, if you want to ping anything, ping, then do not type the IP address. We have to type host, whatever the IP address is, 10.1.1.1, and you can ping. Okay, but right now its IP address is Sir, not available. throughput You command. can What is this throughput command here? Which element? one second. How to identify throughput? Throughput, one second. Uh, Actually, I'm not able to scroll up. I will check with the visual, sir. Okay, show system through output that is available. Or any license summary? Can Yeah, you say? license. Yes, yes, we can say licenses also, bro. Okay, so Okay. license is also available. Okay, so right now it's showing packet rec. Anything is not available right now. Through output, it's a 0 kbps. Okay, and device is up right now from 1 hour 4 minutes 42 seconds. Okay, right now active session is nothing. UDP session, SAP session is not active right now. Okay, so you can run that command. Show system statistic session on. Okay, so it will System show you the statistics. Okay. yes, yes. Okay, and licenses part you can see in the here Windows machine. Okay, so go to the device one, and let me go to the in the below. There is a license part it's showing right now, but right now nothing, no license is available right now on this model. Okay, this is Yes. a virtual Yes. environment. Yes. So yeah.
Okay, so it's not available right now. Okay, so whatever you want to command, you want to type the command, you can just do one thing, otherwise find the command. And basic configuration mode also command. So this is the basic command, guys. Okay, set device config system type static. We have to make sure the management interface is the static one. Then device config system IP address we have to type. DNS netmask configured. You can configure the DNS as well, NTP server as well, same thing. System, then you So the can just type the difference between commit and commit force. commit. Yeah, one more thing. Yes, commit and commit force. Okay, so suppose आपका कोई commit चल रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे commit कर दिया. Okay, commit is not working here, so we have to go to the configuration mode. And if we are trying to commit here, okay, but the another commit is already running in the progress. Okay, so it will not try to like it will showing something is auto commit or anything. Okay, backend में ऐसा नहीं है कि आपका commit already आप सिर्फ commit करोगे. Okay, firewall is doing automatically auto commit also in the backend. Okay, so suppose auto commit is running, okay, right now, and if you are trying to do the commit, then it will show commit process is already under process. Okay, so Okay. you can do one thing, bro. Okay, you can do commit and force, so that auto commit will pause for some time, and this your request will take a first time. Okay, it will take the high Understood. priority and it will take the commit. So आपका जो ऑटो कमिट है ना, वो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेगा, स्टॉप कर लेगा, और आपका ये जो कमिट है ना, कमिट फोर्स, वो आपका पहले कमिट हो जाएगा. Okay, so this is about the firewall. And next we will check right now one of the based हेलो। one. Yes, please. Yeah, Shiv. Yeah, tell me, bro. और विजय, अगर कोई कंफ्यूज जैसे डिलीट करना हुआ तो कोई हाँ, लाइन। हाँ, डिलीट करना है तो सेट, हमने यहाँ पे सेट कमांड रन किया ना, हाँ, सेट की जगह जस्ट डिलीट कर लो, खत्म. जैसे हम लोग जुनिपर में करते हैं। हाँ, बस वही. ठीक, ओके। Okay, so whenever you are trying to commit delete anything, just type the delete command. Okay. Okay, now one of the base we will check right now, a dashboard about the Palo Alto Firewall. Whenever you are trying to log in the Palo Alto Firewall, okay, so this is the first page you will get receive. Okay, and यहाँ पे क्या क्या चीज आएगी, that part we will check. Okay, so here you can see. Okay, so first of all, once you logged in the Palo Alto Firewall, so it's one of the icon it will show. If you want to change, you can change. As per your company logo, you can change also. Okay, this is the Palo Alto Firewall, and this is a few tabs, 7 or 8 tabs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabs is available. One of the dashboard, another is the ACC, monitor, policies, objects, network, and devices. Okay, this is the tabs are available. So we will check today only dashboard tab. Okay, then in the dashboard tab here you can see the layout it's showing. Right now it's showing three column. Three columns means one, second column, and third column. If you want to change, you can. Okay, I want two column only. Okay, so let me set up a two column. It will show you only two column only. Okay, so here you can see everything is showing only two column. Okay, let me do one thing, let me make the three columns. Okay, so it will set the three columns. Okay, right now it's the second column, third column is not showing right now, so you can do one thing. I want to in the okay, let me drag and drop. So I want to here. Okay, in the third column you can do it's 1 second, it's stop working. Okay, I want to do here. Okay, this one also I want to do here. Okay, so not responding properly. Yeah, you can do drag and drop. Okay, so this is the three columns widgets. Okay, what's the widget? This is the one widget, this is the second one, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Okay, so it's showing widget right now. Okay, if you want to delete this one, not an issue, you can this is not required, you can delete also from here. Okay, so let me delete this one. This one I want to delete, this one I want to delete, I don't require it. Okay, but you can where you can restore these widgets also, let me tell you that one. Okay, so in the widgets icon, application, so what type application? So top application, you can just click here, so it will show the top application. Let me go to the top risk high applications. So it will show you right now, but nothing is found right now. Okay, we didn't configure anything. SSC risk factor, it will show you nothing. Okay, so here you can see drag and drop. Okay, थोड़ा slow है guys firewall. I think lab is working right now, कहीं और भी काम चल रहा है.
ओके, सो मैंने यहाँ पे जो कुछ टैब्स मिसिंग थी वो यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, नाउ लेट मी ऐड अनदर फ्यू टैब्स। ओके, जैसे सिस्टम में जाओगे, सो यू कैन सी द इंटरफेसेस एज वेल। ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन द इंटरफेस, इट विल show you the all interfaces. It will show you the high availability. If you have any high availability available, then it will show you the availability also. Okay, so there is no available, HA is not enabled, that's why it's showing here. And locks, so यहाँ पे किसने लॉक लिया ये जो बंदे का, वो भी यहाँ पे शो करेगा। ओके, दैट पार्ट वी विल चेक कवर। Okay, so let me get top application. I want to put here. Okay, one second. उसके बाद विजेट्स में और भी रहेंगे, लॉक्स में थ्रेट लॉक्स, यूआरएल लॉक्स, डेटा फिल्टरिंग लॉक, एनीथिंग, बट ये जो ग्रेड आउट है ना वो नहीं शो करेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी अवेलेबल हियर। ओके, सो इट विल शोइंग नथिंग हियर, बट दिस इज द like highlights one. You can just once you click here, then it will show here. Okay, so this is about the widgets. And last update, when it's updated last, the 5.26 28 minutes it was updated last time. Okay, and this is the refresh ratio, guys. Okay, so it will auto refresh this all the widgets after 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, and manually. If you want to do manually, then we have to click here only. Okay, so once you click here, guys, all the tab will refresh. Here you can see. Okay, here this is, if you want to refresh individual one, you can just refresh this from here. But if you want to refresh all this tab, you can just tip here. Okay, so all the tab will refresh, and if you want to click here help, then it will open the new window. Okay, and here you can see all these things. Okay, whatever help required you can find from here only. Okay, so let's open. ओके, डैशबोर्ड में जो भी आपको करना है, देन एसीसी टैब, मॉनिटर टैब, पॉलिसीज में जाना है, तो पॉलिसीज में भी आपको देखेगा पॉलिसी टाइप कितने हैं, मूव क्लोन कैसे क्लोन करना है, ऑडिट लॉग पॉलिसी, सिक्योरिटी कैसे करना है, नेट को कैसे क्रिएट करना है। तो वंस यू क्लिक ऑन द नेट, देन जनरल टैब क्या है, पैकेट टैब क्या है, ओके, नेट ट्रांसलेटर में क्या है, सब कुछ वो सारे सारा वो चीज हेल्प में शो करेगा। लेट मी क्लोज इट, एंड नेक्स्ट वन। ओके, हेल्प में हो गया। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी, यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एच ए होता तो सारा का सारा देखेगा, बताता वहाँ पे एच ए क्या है। तो एच ए में पूरा दिखता कि कौन सा फायरवॉल एक्टिव है, विच फायरवॉल इज एक्टिव, विच इज द पैसिव। ओके, पैसिव इंटरफेस अवेलेबल, देन एप्लीकेशन आईडी, देन HA1, HA2, HA3, HA बैकअप 2, इट्स एनेबल और नॉट अवेलेबल, सिंक्रोनाइज है कि नहीं, वो पूरा का पूरा शो करता है। एंड यहाँ पे जो भी इंटरफेसेस है यहाँ पे, वो गाइज अभी ग्रेड आउट है, विच मीन्स द नो interface we didn't configure yet, and it's showing down. It's not configured, otherwise it's down. Okay, so once we configure the interface, और जो interface हमने configure किया और up है, तो it will show you as a green icon. Okay, and interface configure करने के बाद वो down है, तो it will show you as a red LED, red line. Okay, देन नेक्स्ट वन इज जनरल इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में जितना भी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे शो करेगा। डिवाइस का नाम क्या है, मैनेजमेंट आईपी क्या है, मैनेजमेंट सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। मैक एड्रेस क्या है, कौन सा मॉडल है, सीरियल नंबर कौन सा है, सीपीयू आईडी, यूआई आईडी जो यूनिक रहता है हर एक मॉडल का, वो सारा का सारा रहेगा। लाइसेंसेस अवेलेबल है, तो कौन सा लाइसेंस है, VM100, VM300, 500, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे शो करेगा। कौन सा मोड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट वर्जन कौन सा यूज कर रहा है। ओके, देन एप्लीकेशन वर्जन कौन सा है, वी हैव टू अपडेट। हेलो विजय। Maybe some network issue in lab. Sorry guys, there was power went down in my place. Okay, so let me show you that one. Okay, let me share my screen one more time. Sharing is not on at all. I think who is the co-host? Manoj, could you please make me the host? Manoj.
Who is the Manoj? Manoj, hello? Manoj, are you in the call? Hello? Manoj? Hello, Manoj? अरे यार, you are the host now. Yes, sir. Bro, please speak here, at least speak. Okay. Thank you so much. Okay. So Sir, let me share my fine. screen. Okay. Okay. So hope so it's visible now, guys. Sorry, my power went down at this time. Okay. So here you can see. Okay. So हेलो विजय, yes, yes, yes. You tell me. वो इंटरफेस जितने भी उनमें कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या हम उनमें कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं क्या? किसी इंटरफेस पे भी पासवर्ड नहीं ब्रो, पासवर्ड क्यों सेट करना है आपको? सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं कर सकते? नहीं नहीं, क्यों, कोई जरूरत नहीं है ना. ओके। Okay. So that's you can see the here and general information as I told you. Okay, everything is available. So we can update this firewall version as well. Okay, so we can upgrade this one. Okay, so I think let me increase the, so hope so it's visible with you, right? Okay. Okay, so here you can see the application version, which application version is available, then the URL filtering available. So every weekend, every week, Palo Alto is releasing the new version. Then you can download and install. Okay, and what is the date and time, and from like since how long this firewall is up and okay, so it's showing up, down, everything. Okay, and in the below there is a two resource system is available showing right now. It's a management plan and data plan. Okay, so there is a two plan. Okay, suppose high CPU available on the management plan, then only you will face the uh, access of the trying to access whenever you are trying to GUI access of the Palo Alto firewall or CLI. Okay, so that time you will face the slowness issue. Okay, it will not affect the any users. Okay, but suppose data plan is high, then user will the facing the slowness issue. Okay, so that is a both are the not dependent each other. Okay, both are the individual one. Okay, now second one, guys. Okay, 1 second, let me scroll up. Okay, so admin logged in, admin. Okay, so right now you can see the I am logged in right now as the admin. Okay, so first of all, just took the console access of the Palo Alto firewall, and it was ideal from last 4 minutes. Okay, and session started at this date and time, and after I take the web access. So right now I am the web access. If someone is L1 or L3 or anyone ABC user just try to log in, you can see the here in this logged in the admin tab. Okay, so किसने भी यहाँ पे लॉग इन किया वो सारा का सारा यूजर नेम का और कौन से मशीन से लॉगिन किया वो भी आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस भी शो करेगा. ओके, सो दैट पार्ट यू कैन सी. ओके, सिस्टम लॉग्स. ओके, सो जितना भी हमने कमिट किया, कितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया ना, यहाँ पे वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, हमने कमिट कर दिया तो वो सारा का सारा कमिट सिस्टम लॉग में शो करेगा. ओके, सो अभी तो इतना ही शो करेगा, बट आपको मोर सिस्टम लॉग्स देखना है तो एंड यू कैन गो टू द मॉनिटर सेक्शन. ओके, इन द मॉनिटर सेक्शन हियर you can see system, yeah, this one. Okay, so you can see each and every events. Okay, firewall up आ रहा है, डाउन जा रहा है, ऑटो कमिट कर रहा है, सब कुछ वो यहाँ पे शो करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे कमिट वाला ऑप्शन भी आएगा ना, जो हमने कमिट किया है, जो भी किया ना, जो इतना भी किया वो सारा का सारा देख सकते हो. हमने कमिट किया, कमिट सक्सेसफुली हो गया. एडमिन ने मॉनिटर टैब में हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो भी यहाँ पे आ रहा है. हमने मॉनिटर टैब में क्लिक किया, राइट, तो वो भी यहाँ पे शो करेगा. देन जस्ट क्लिक ऑन द डैशबोर्ड. ओके, सो वो भी यहाँ पे आएगा, देख सकते हो. क्लोज जो भी कनेक्शन है मॉनिटर टैब में किया तो वो सारा का सारा चीज यहीं पे शो करेगा. इफ यू वांट टू रिफ्रेश, यू कैन रिफ्रेश दिस वन आल्सो. ओके, सो दिस इज अ सिस्टम लॉक्स एंड लॉक्स. दिस इज अ लॉक्स आइकन. ठीक है, आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो गाइस, ठीक है, और आपको पूरा फायरवॉल लॉक लेना है. ठीक है, तो बाद में कोई भी बंदा लॉग इन तो कर पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन तो कर पाएगा, बट वो बंदा क्या नहीं कर पाएगा, कमिट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो आपको लॉक लेना है. सो टॉप में यहाँ पे जो लॉक आइकन है ना, उस पे क्लिक करना है. ठीक है, तो जैसे ही करोगे तो आपको टेक अ लॉक लेना है. ठीक है, आपने लॉक ले लिया. और कमिट कमिट का लॉक लेना है या तो कौन सा लेना है, कॉन्फ़िगरेशन का लॉक लेना है, तो मेरे को दोनों लेना है. तो कमिट का लॉक लेना है तो नो वन कैन कॉन्फ़िगरेशन. सो यहाँ पे आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन कमिट्स डालना है डाल सकते हो. प्लीज डू नॉट कमिट. ठीक है, ऐसा करके आप डाल सकते हो. ठीक है, तो आपने यहाँ पे कमिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपने जो भी है वो कर दिया. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है,
जो भी आपने यहाँ पे कमिट वाला ऑप्शन ले लिया तो यहाँ पे एक लॉक आइकन आ गया, और कौन से यूजर ने लॉक लिया है वो भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, सो यू कैन जस्ट रिफ्रेश दिस वन, देन यू कैन सी एडमिन कमिट एंड दिस वन लॉग्ड इन, यस, तो उसने यहाँ पे लॉक्स लिया हुआ है। ओके, इफ यू वांट टू रिमूव, अगर ये बंदा, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई नेटवर्क टीम है, दो चार बंदे का टीम है, ओके, एवरीवन हैव अ सेम एक्सेस सेम प्रिविलेज, ओके, सो ये बंदा अगर भूल गया और चला गया अगर उसका शिफ्ट खत्म होने के बाद, and now if you want to commit then you can take a lock as well, you can remove, how, just click here and remove lock, and yes I want to remove, तो यहाँ पे और वो लॉक भी चला जाएगा, एंड ओके, सो हियर यू कैन सी देयर इज नो लॉक फाउंड। ओके, सो हियर यू कैन डू दिस वन। टॉप एप्लीकेशन, तो कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा यूसेस हो रहा है वो टॉप एप्लीकेशन भी यहाँ पे वो ले सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज अ गाइस कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स। ओके, कॉन्फ़िग लॉग जितने भी कमिट किए हमने ये वो सारा का सारा चीज यहाँ पे शो करेगा। सो वॉट एवर कमिट वी डिड हियर, ओके, so it's a config devices, device config types, and everything it's showing how many type we run the some set commands. When once we run the some delete command, that one also it will show here. Okay, so this is our config log. This is a high applications SSA factor logs also. Okay, so it will show everything here. Okay, and if you want to see anything, okay, so आपने जो किया यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, यू कैन सी इज अ ग्लोबल सर्च गाइस। ओके, जो भी सर्च करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, so if you want to search anything you can just type, let me try, okay, I didn't configure right now, but let me try 1.100 and hit enter. Okay, so it will show you the management interface settings. Okay, so just click on it, IP address, just expand this one. Okay, so if you want to click here IP addresses, okay, so it will show you that particular location only. Okay, it will take you the particular location, so device setup and interfaces here, this IP addresses we configure, so from here we can check. Okay, so आपका जितना भी अगर suppose you have one rule, okay, suppose you have one IP addresses 10.1.1.100, this IP address is configured in the 10 of policies, okay, पर आपको एक नया पॉलिसी क्रिएट करना है तो आपको देखना है कि कौन से पॉलिसी में आपको ये वाला ऐड करना है, so you can just do the global search and you can add that particular IP address. We will check in this detail while we are checking the policies, how to create a policy, how to create a rule, each and every. This is the global search right now. Okay, so whatever if you want to check, do the global search. Okay, that part you will check it. Okay, and in the last, let me tell you guys. हेलो विजय। Okay, in the last second. Okay, yeah, I just mobile, so I'm working. I just logged in my mobile. I changed the network, but who is the? Let me do on the who host someone. Okay, not an ending. We will end this call after some time. Okay, so let me click on the dashboard. Okay, so here you can see in the below there admin. Okay, so who logged in right now? We logged in through admin only. Okay, it's showing a second one. Uh, log out. If you want to log out, just click here. Okay, हेलो and विजय। last login. Who like admin? Yes, please. अगर मुझे सिस्टम का मशीन Yeah, का tell me. वो मशीन का अगर मुझे रैम चेक करना है या फैन चेक करना है या कोई अलार्म्स आ रहा है, वो कैसे चेक करेंगे? कितने रैम है, कितने फैंस है, कोई अलार्म्स है? वन सेकंड, वो पूरा का पूरा ब्रो सीपीयू में दे सकते हो, यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे नहीं दिखेगा पूरा का पूरा, बट आपका जो सीएलआई में थ्रू दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो कितने चेसिस जो सिस्टम चेसिस वगैरह जो भी रहेगा ना वो पूरा का पूरा वहीं पे देख सकते हो। वो ओके। स्पीकिंग दिव्या, ओके। ओके, थैंक यू। ओके, या, okay, so that part you can check that from there only. Okay, now this is the admin. Okay, कौन सा यूजर यहाँ पे लॉगिन है, and log out, if you want to log out from here you can do, and last login time, so यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा कब उसने लॉगिन किया था, कौन से डेट पे कितना टाइम पे लॉगिन किया था। ओके, and कोई भी मैसेज वगैरह मेल वगैरह रहेगा, फ्रॉम हियर यू कैन सी आपको पास फोर में जो भी आप कमिट कर रहे हो, ओके, जितना भी आप कमिट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो कमिट का
आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। आपको कोई और काम करना है, यू कैन क्लोज इट, बट वो जो टास्क रहेगा ना वो यहाँ पे ओपन रहेगा। सो दिस इज आवर टास्क मैनेजर एंड दैट टाइप यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। सो आप देख सकते हो, अब हमने कमिट किया था प्रीवियसली, तो वो कम सक्सेस के नहीं, वो तो सारा का सारा दिखेगा, हाँ आपका स्क्रीन सक्सेसफुली हो फ्रीज गया। है, इज इट? स्क्रीन फ्रीज आपका आ नहीं रहा कुछ। वन सेकंड, लेट अभी तो पीपीटी चल रहा है। टाइम, वन सेकंड, वन होप सो इट्स विजिबल नाउ। हाँ अब आ गया। ओके। हाँ, oh sorry sorry, okay I think मोबाइल पे था, ओके समथिंग नेटवर्क इश्यूज। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो लास्ट लॉगिन है यहाँ पे दिखेगा, एंड उसके बाद हमारा टास्क मैनेजर गाइस। ओके, सो दिस इज अवर टास्क मैनेजर। सो आप ये यहाँ पे कमिट किया, फिर उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, ठीक है। आप आराम से इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, एंड वंस क्लोज इट, ओके, सो आपका कमिट है ना वो टास्क मैनेजर में शो करेगा। सो जो भी आपको कमिट करना है, ठीक है, ये देख सकते हो सिस्टम लॉग वगैरह बैकअप में, बैकएंड में पूरा का पूरा चलता रहेगा, ठीक है। रिपोर्ट वगैरह जो कमिट्स वगैरह लोड वगैरह वगैरह, ये वाला कमिट देख सकते हो, ऑटो कमिट भी प्रीवियसली चला था, ठीक है, जो इनिशियली हमने किया था अभी। फिर उसके बाद ये वाला कमिट देखना है कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा स्टेटस क्या है। इफ इट इज completed इट विल शो यू completed, बट रिजल्ट भी शो करेगा। फेल है तो फेल दिखेगा, सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल दिखेगा। फेल है तो क्यों फेल है उसका वार्निंग भी यहाँ पे शो करेगा, व्हाई इट्स फेलिंग। ओके, सो इट विल शो हियर ऑल्सो। ओके, so this is our guys dashboard. Okay, and languages also, okay, so there is some languages available, English, then French I think, then जिसको जो भी आता है you can no, language guys, but English, so we cannot change this right now. Okay, then just okay, cancel it। पूरा का पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड पे। सो इसमें किसी को डाउट है गाइस डैशबोर्ड में? anyone सर any doubt एप्लीकेशन, guys in the dashboard? टॉप टॉप एप्लीकेशंस मींस मतलब टॉप एप्लीकेशन मतलब क्या बैंडविड्थ होगा वाइज कि ना, आईपी हिसाब से वो दिखाएगा कि कौन सा आईपी कितने बैंडविड्थ कंज्यूम किया है, ये भी दिखाएगा हाँ, ना। तो टॉप एप्लीकेशन में क्या होता है ब्रो, लाइक कौन सा एप्लीकेशन वगैरह जो यूज कर रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर यूजर है, ठीक है, वो टोरेंट से कोई डाउनलोड कर रहा है कोई एप्लीकेशन के थ्रू, तो टोरेंट साइट जो एप्लीकेशन है उसमें से कुछ हाई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या तो कोई बंदा कोई कोई ड्राइव है उधर कोई कुछ अपलोड कर रहा है, ठीक है, तो वो सारा का सारा दिखाएगा कि हाँ ये इसकी वजह से ये पूरा का पूरा थोड़ा सीपीयू वगैरह जो है वो हाई हो रहा है, ठीक है। यस सर, वो तो सही है, मतलब एप्लीकेशन मींस विथ आईपी एड्रेस और ओनली एप्लीकेशन दिखाएगा वो। एप्लीकेशन दिखाएगा, एप्लीकेशन ओके। आईपी एड्रेस वगैरह जो भी देखना है आप यहाँ पे दे सकते हो, एसीसी टैब में वो आएगा यहाँ पे ब्रो, ठीक है। एप्लीकेशन ओके। ओके। यूसेस अभी तो कुछ नहीं है, हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, करेक्ट ठीक करेक्ट। है, तो वो यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे एप्लीकेशन यूजर्स भी देख सकते हो कौन सा एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पे यूजर एक्टिविटी भी देख सकते हो कौन सा यूजर है। आपको कुछ सोर्स आईपी एड्रेस से आपको कुछ चेंज करना है, यू यू हैव टू फाइंड, मतलब आपने वो देखना है कि कौन सा यूजर वो देख सकता है, वो भी कर सकता है, दे सकते हो। कौन सा डेस्टिनेशन है पे एक्टिविटी चेंज कर सकते हो इस टैब में, ठीक है। तो सारा का सारा वो यहाँ पे देख सकते हैं। सोर्स रीजन के हिसाब से भी कर सकते हो कि मेरे इंडिया में कोई रीजन है तो उसमें कितना ट्रैफिक है वगैरह, वो सब आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। बट मेजरली यू कैन फाइंड इन द मॉनिटरिंग ओनली ब्रो, ठीक है। ये जो ट्रैफिक लॉग्स है ना वो सारा का सारा उधर ही शो करेगा और कुछ नहीं। जितना भी लॉग्स है ना वो वही पे शो करेगा। सो ये था हमारा गाइस डैशबोर्ड। इसमें किसी को डाउट है, मतलब आज के सेशन में किसी को डाउट है क्या जो हमने अभी देखा कि लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है? ओके, सो अभी डाउट सेशन रखे कि किसी को और कुछ पूछना है क्या, जो हमने यहाँ पे इंटरफेसेस ये वाला जो किया उसमें किसी को डाउट है, या तो फिर हमारा ये जो पॉलो डैशबोर्ड में किसी को डाउट है क्या? लॉक यूजर कीजिए ना, लॉक यस, यूजर। लॉक यूजर में हाँ। क्या है ब्रो, समझ लो कि तुम काम कर रहे हो, हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। वी आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, वी आर वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट, ओके। सो सपोज I am working in the major issue and I don't want to you can commit or you can configure anything. Okay, so I will do one thing. I will take the log, okay, of this firewall for particular time. Okay, if I take the commit config one, then I will show please do not config, okay, anything you can just put the comments and anything, okay। so आपको easily understand रहेगा कि हाँ इसने कमेंट डाला है कि अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक लॉक ले लिया है, ठीक है। तो
आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन भी ट्राई करोगे ना, तो वो यहाँ पे देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाओगे बट कमिट वगैरह या कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहीं पे एरर दे देगा कि यू कैन नॉट कमिट बिकॉज द लॉक इज टेकन बाय अदर एडमिन, और एडमिन का ओके। नाम भी वहां पे शो करेगा। ठीक है, अगर अब मैं गलती से भी ये रिलीज करके भी मैं निकल गया, ठीक है, मेरा करेक्ट। शिफ्ट खत्म हो गया और आप आ गए और फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यू कैन डू जस्ट क्लिक ऑन रिमूव एंड क्लोज एंड यू कैन वर्क, स्टार्ट योर वर्क। बट आप कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो कमिट करोगे, जो पिछले इंजीनियर जो कॉन्फ़िगरेशन किया रहता है वो तो एट ए टाइम ही कमिट हो जाएगा ना, लेटेस्ट हिसाब से। हाँ, वो तो अपने हिसाब से होगा, जितना भी मैं और एक चीज गाइस, जितना भी वॉट एवर यू आर कॉन्फ़िगर राइट नाउ, ओके, वॉट एवर यू आर कॉन्फ़िगर द पॉलिसी नेट रूल एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर, ओके, मेक श्योर यू आर कमिट दैट ऑप्शन, अदरवाइज वो कमिट नहीं होगा। ठीक है, जब भी कमिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा गाइस, एक और चीज, जब तक वो कमिट नहीं करेगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगा। अगर इनकेस फायरवॉल डाउन चला गया, अगर इनकेस फायरवॉल इज गॉन faulty or reboot, then those changes are gone. Okay, so make sure you are trying to commit that one. Okay, right now if I'm trying to commit but it's showing great icon, means यहाँ पे configuration के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, so let me do one thing, let me create one zone। Okay, let me create one zone, इनसाइड जोन वगैरह कुछ भी कमिट कर रहा हूँ मैं, इनसाइड जोन नाम दे दिया, देख सकते हो हाईलाइट हो गया कि नहीं। ठीक है, मीन्स वहां पे कोई चेंजेस जो मैंने किया वो पेंडिंग है कमिट के लिए। ठीक है, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ट्राई टू कमिट, एंड कमिट में भी क्या है चीज, ये वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, कमिट ऑल द चेंजेस, यहाँ पे क्या होगा कि अभी मैं और हम सभी बंदे एक ही प्रोजेक्ट में हैं। ओके, वी आर all in the same project guys, okay, we are all in the same role and responsibility, okay, we have same privilege, okay, then if I do commit all changes, which means Lokendra is doing like configure the some rules, okay, rules and everything, if I do commit all, which means that Lokendra changes also it's applied, it's also commit. But if I do commit my changes only, which means my changes only, which means I just created a one zone that changes only I can commit. Okay, so make sure this is the best practice. Okay, don't commit all changes. Please commit your changes also. Okay, and if you want to preview the changes, so you can just preview the changes who what you configured. You just click OK. Okay, so it will open a new window. It's right now it's blocked out, so let me open that one, allow. Okay, and let me preview changes. Okay, then it will open a new window, and here, okay, it's showing five internal error. Don't know why. Okay, but it will show you the you created the some in zones inside zone, and you can do. You can validate also. Which validate means if you are trying to commit and if it goes fail or like okay like fail होगा या successful होगा, so you can validate the changes. If it is successful, then you can do commit also. Not an issue. This is the showing if it is fail or like successful only. Okay, so it will showing successful, then you can do commit. Yeah, so I'm just trying to commit this one, this is inside one, and I just created and I'm just changing my commit only, देख सकते हो configuration by admin. Okay, if I my name is if I logged in with the Vijay, and it will show you the only configuration by administrator Vijay only. Okay, not all changes. Okay, here you can say configuration commit successfully and it's successful. So this is how you can configure everything, and this is our dashboard, guys. Okay. Now next onwards, next Saturday we will start. Uh, we will looking in the zones, how to configure a zone, how to configure the interfaces, what is the purpose of the zone, then what is the interface types is available. Okay. So here you can see in the interface type there is a multiple interface type. Here you can see. Let me show you. Let me click on this one. So interface types. Okay. So here you can see four five types is available, tab interface is available, HA interface available, vwire virtual wire available. Okay, layer 2 interface available, layer 3 interface available. We will check discuss in the detail this all these things. हेलो। Okay, yes, yes, you, अभी एक क्वेश्चन मेरा कि ये yes, please. फायरवॉल को कहाँ पर में प्लेस किया जा सकता है, मतलब कोई इंटरव्यू में पूछे तो फायरवॉल कहाँ प्लेस करते हैं, स्विच के आगे Switch या? and router के बीच में you can see. ओके। Okay,
आप डायरेक्टली भी आईएसपी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, आईएसपी साइड भी कर सकते हो, बट आपका वो जो इंटरनेट एज अ गेटवे यूज कर सकते हो। ओके, ओके या बट वो हैवी फायरवॉल होना चाहिए। नॉर्मल फायरवॉल यू कैन प्लेस द स्विच एंड राउटर बिटवीन ओनली, आपका जो कोर स्विच और वैन स्विच रहेगा और जो कोर राउटर रहेगा उसके बीच में आप प्लेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो गाइस, एनी डाउट फॉर टुडे सेशन? And next Saturday we will cover 2 hours or 2.5 hours. Okay, so make sure you are available at that time only. Okay, so सर अभी कितने आवर initially का क्लास है ये, टोटल 2 आवर, आवर? 2 आवर मिनिमम पकड़ लो ब्रो। नहीं नहीं ओके, सर, टोटल कितने आवर हो का गए क्लास है? टोटल 40 और 45 प्लस पकड़ लो, ओके, यानी कि बिकॉज हम 3 महीना स्लो लगेगा ना, जाएंगे। 3 मंथ्स तो क्लास नो में? नो नो, 2 महीने आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके देन। बट हम क्या करेंगे, अगर बीच में अगर हमारा कोई बड़ा टॉपिक है ना तो उसमें थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। और ओके। सभी के परमिशन से हिसाब से अगर अपने को मतलब कुछ इमरजेंसी आ गया है, ठीक है, तो इफ आई एम नॉट अवेलेबल और इफ एनीवन नॉट अवेलेबल, गाइस प्लीज मेक श्योर आप अवेलेबल नहीं हो तो जस्ट आप मैनेजमेंट टीम को कंफर्म कंफर्म कर दो कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा उस टाइम पे। तो अब उसका फिर आपको कुछ अगर उसके रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर लेंगे, अगर किसी को डाउट है तो आप रीच आउट टू अस। ओके, एनी डाउट फॉर टुडे सेशन गाइस? लेट मी स्टॉप दिस शेयरिंग फर्स्ट। ओके, और विजय, ये मतलब अगर सबसे बेस्ट अगर कोई फायरवॉल होगा तो कौन सा हो सकता है मार्केट वेंडर पे से? देखो अभी टॉप 3 में मैंने आपको इनिशियली बताया था 3 फायरवॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल पालो अल्टो, देन फोर्टिनेट, देन चेक पॉइंट। ओके